Good morning, everyone. My name is Deepak Gangwa, and today's session we will see sources of finance. What are the sources of finance? A company might raise new funds from the following sources: the capital market, न्यू शेयर इशू कर सकती है, राइट इशू कर सकती है, लोन ले सकती है, रिटेन अर्निंग, बैंक बोरोइंग्स, गवर्नमेंट सोर्सेज, बिजनेस एक्सपेंशन, वेंचर कैपिटल एंड फ्रेंचाइजिंग। तो देखिए वन बाय वन वी विल सी ऑल दीज थिंग्स। या तो कंपनी ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर इशू कर सकती है या deferred revenue shares issue कर सकती है। Deferred ordinary shares are a form of ordinary share which are entitled to dividend only a certain date or if profits rise above a certain amount. Voting rights also differ from those attached to other ordinary shares. Okay? या न्यू इशू कर सकती है। न्यू शेयर इशू कंपनी अगर न्यू इशू इशू करती है तो एक कंपनी सीकिंग टू obtain additional equity funds may be an unquoted company wishing to obtain a stock exchange quotation or an unquoted wishing to issue new share but without obtaining a quotations. Methods कौन से हैं? ऑफर फॉर सेल, प्रोस्पेक्टस इशू, प्लेसिंग। ओके, सो ये सारे ऑफर्स हैं। नाउ इज राइट इशू। अब देखते हैं, या तो देखिए मैंने आपको बताया या तो कंपनी कोई नया इशू कर सकती है, न्यू इशू कर सकती है। ठीक है, अब है राइट इशू कर सकती है। राइट इशू प्रोवाइड्स अ वे ऑफ रेजिंग न्यू शेयर कैपिटल बाय मींस ऑफ एन ओवर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उन्हीं के लिए राइट इशू किया जाता है। इनवाइटिंग देम द सब्सक्राइब कैश फॉर न्यू शेयर्स in proportion to their existing holdings. For example, a right issue on a non for 4 basis at 280C per share would mean that the company is inviting its shareholders to subscribe one new share for every 4 shares they hold at a price of 280C per new share. A company making a right issue must set a price which is low enough to secure the acceptance of shareholders who are being asked to provide extra funds, but not too low, so as to avoid excessive dilution on the earnings per share. इसी तरह कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होगा, कंपनी को डिविडेंड के ऊपर प्रेफरेंस मिलती है। प्रेफरेंस शेयर्स भी इक्विटी शेयर्स की तरह होते हैं, उसमें परसेंटेज फिक्स रहती है डिविडेंड की, और अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उनको प्रेफरेंस दी जाती है। इक्विटी शेयर्स को अगर प्रॉफिट होता है उनका परसेंटेज फिक्स नहीं है। फिर लोन ले सकती है। लॉन्ग स्टॉक इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज बाय कंपनी फॉर विच इंटरेस्ट पेड यूजुअली हाफ ईयरली एंड एट फिक्स रेट। इसमें लोन में क्या होता है, एक फिक्स रेट से ही आपको लोन दिया जाता है, जैसे 10%। अब आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको 10% की रेट से इंटरेस्ट देना ही देना है। ओके, इसके बाद आता है रिटेन अर्निंग। So retained earning for any company, the amount of profit retained within the business has a direct impact on the amount of dividend. Profit reinvested, retained earnings profit that could leave being paid as dividend. The major reasons of using retained earnings to finance new investment. अगर कंपनी को कभी फायदा नहीं हो रहा होता है तो अपनी कंपनी को अपनी गुडविल बनाए रखनी होती है, तो रिटेन अर्निंग में से भी कंपनी पैसा प्रॉफिट बांट सकती है, पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। बैंक लैंडिंग, बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स आर एन इम्पोर्टेंट यूज of finance to companies. Bank lending is still mainly short term, although mid term lending is quite common these days. Okay, ओवरड्राफ्ट के द्वारा ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन लिया जा सकता है बैंक से। लीजिंग, a lease an agreement between two parties, lessor or lessee. The lessor owns a capital asset but allows to lessee to use it. The lease make payment under the terms of the lessee to lessor for a specified period of time. Leasing is therefore a form of rental. Lease assets have usually been plant and machinery, cars and commercial vehicles. Okay. Hire purchase is the form of installment credit. Hire purchase is similar to leasing with the exception that ownership of goods passes to hire purchase customer on payment of the final credit installment.
where lessee never becomes the owner of the goods. Government assistance. Government provides finance to companies in cash grants and other forms of direct assistance. As part of its policy or helping to develop the national economy, especially in high technology industries and in areas of high unemployment. Right now, it's venture capital. Venture capital is the money put into enterprise which may all the loss if the enterprise fails. A businessman is starting up a new business will invest venture capital of his own, but he will probably need extra funding from a source other than his own pocket. However, the term venture capital is more specially associated with putting money, usually in return for an equity stake into new business, a management buyout, or a major expansion scheme. The institution that puts in the money recognizes the gamble inherent in the funding. There is a serious risk of losing the entire investments, and it might take a long time before any profits and returns materialize. But there is also the prospect of very high profits and substantial return on the investment. A venture capitalist will require a high expected rate of return on investment to compensate of the high risk. फ्रेंचाइजिंग फ्रेंचाइजिंग करके भी फ्रेंचाइजिंग भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है फ्रेंचाइज द मेथड ऑफ एक्सपेंडिंग business on less capital than would otherwise be needed for suitable business. It is an alternative to raising extra capital for growth. Franchise includes Budget Brand, Aka, Wimpy, Nados Chicken, and Chicken Inn. So these are the sources of finance. I hope you have understood the session. If you have any doubt, then please let me know. I will clarify your all doubts. Thank you very much.